આપણે ત્યાં બ્રહ્મચર્ય એટલે કામથી લડવાની વાત નથી. ब्रह्म में चरने की बात है, ब्रह्मचर्य. बस उसी ब्रह्म में चरते रहो. बाकी काम से लड़ना और ये अंधकार से लड़ोगे तो अंधकार थोड़ी ना मिटेगा. दिया जलाओ, अंधकार मिट जाएगा. ब्रह्म में चरण हो तुम्हारा, ब्रह्म में ही विचरण हो, ब्रह्म का ही चिंतन हो. ब्रह्मचर्य बहु पॉजिटिव शब्द है आ ब्रह्मचर्य. तो राजा ययातिनी कथा थी एक तो ए शीखवानुं. बीजू, राजा ययातिना बे पत्नी हता. एक दैत्योना गुरु शुक्राचार्यनी दीकरी देवयानी. बीजी दैत्योनो राजा वृषपर्वा एनी दीकरी शर्मिष्ठा. तो शर्मिष्ठा थी 3 पुत्र थया, द्रुह्यु, अनु, पुरु. देवयानी थी 2 दीकरा थया, यदु अने तुर्वसु. आ यदुनो जे वंश आगळ चाल्यो ए यदुवंश, अने एमां भगवाननुं प्रागट्य. केम? ययातिने तो आटला 5 दीकरा हता, एमां यदुना ज वंशमां केम भगवान? तो ए दशमस्कंदना प्रारंभमां कह्युं, यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम. यदु धर्मशील है. कौन से धर्म का उसने पालन किया? बोले पिता ने जब ये बताया कि बेटा तू अपना जवानी मुझे दे दे, मेरा बुढ़ापा ले ले, राज्याधिकार तेरा होगा, तो मेरी फिर इतनी सेवा कर, बाद में तुझे राज्याधिकार मिलेगा. मोटो दीकरो એને મળે ને રાજગાદી. એટલે યદુએ કહ્યું કે એ ન થાય બાપા, એવું ન કરાય. મારી જવાની લઈને તમારે મારી માતાના સાથે ભોગ ભોગવવા છે, એ તો અધર્મ થાય. वो मैं नहीं करूंगा. बोले फिर तुझे राजगादी नहीं मिलेगी. बोले वो कबूल, वो आपकी इच्छा की बात, लेकिन मैं अधर्म नहीं करूंगा. जिसने धर्म के लिए अर्थ को ठुकराया, राजसत्ता को ठुकराया, ऐसा जो धर्मशील व्यक्ति है यदु, उसके वंश में भगवान का प्रागट्य. साधारणतया लोग अर्थ के लिए धर्म को छोड़ देते. यदु वो धर्मशील महापुरुष हैं जिन्होंने धर्म के लिए अर्थ को ठुकराया, सत्ता को ठुकराया. इसलिए यदोश्च धर्मशीलस्य, माटे यदुना वंशमां भगवान प्रगट थया. दशमस्कंद भागवतનું હૃદય છે. દશમસ્કંદમાં પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થાય છે, કારણ કે ભગવાન હૃદયમાં બિરાજે છે. ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં હૃદ્દેશેર્જુન તિષ્ઠતિ. વળી 9 સ્કંદની કથા એ 9 માસની સગર્ભાવસ્થા છે એવું સમજો. બાળક માના ગર્ભમાં 9 માસ પર્યંત રહે છે, અને 10મા મહિનાના પ્રારંભે એનું પ્રાગટ્ય થાય, એનો જન્મ થાય. એમ દશમસ્કંદના પ્રારંભે ભગવાનનો પ્રાદુર્ભાવ શ્રીમદ ભાગવતમાં કહ્યો છે. રાજા પરીક્ષિતના પ્રશ્નથી, એની પ્રાર્થનાથી દશમસ્કંદનો પ્રારંભ થાય છે. રાજોવાચ કથિતો વંશ વિસ્તારો ભવતા સોમ સૂર્યયો રાજ્યામ ચોભય વંશ્યાનામ. બંને વંશની કથા આપે કહી, સૂર્યવંશ અને ચંદ્રવંશ. એમાં થયેલા મહાપ્રતાપી રાજાઓ, મહાપ્રતાપી પુરુષોની આપે કથા કહી ભગવાન. હવે તો ચંદ્રવંશમાં પ્રગટ થયેલા મારા ઈષ્ટદેવની કથા આવી. હવે આપ વિસ્તાર કરો, ભગવાનના પ્રાગટ્યની કથા સંભળાવો. ભગવાનની વ્રજલીલા, ભગવાનની મથુરા લીલા, ભગવાનની દ્વારકા લીલા, આ બધું મારે વિસ્તારથી સાંભળવું છે. ભગવાન મને આપ એ સમજાવો. મારા મનમાં પ્રશ્ન છે કે દાઉજી તો રોહિણીજીના ઉદરથી પ્રગટ થયા હતા, તો એ દેવકીના 7મા પુત્ર કેમ કહેવાય છે?
ભગવાન મને એવું લાગે છે કે આ કથા છે ને એ ભવરોગને દૂર કરવાની દવા છે, અને આ દવા કડવી નથી, મીઠી છે। श्रोत्र मनोभिरामात, कान को और मन को आनंद देने वाली। और ये दवाई मुंह से पीने की दवाई नहीं है, कान से पीने की दवाई है, मीठी है, मन को कान को आनंद देती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि निवृत्त तरशई ही उपगीयमानात्, इस औषधि के देने वाले, भवरोग को मिटाने वाली इस औषधि के देने वाले आपके जैसे परमहंस निवृत्त तृष्ण, ये वैद्य है। नहीं तो वैद्य यदि लालची हो तो ऐसी दवाई देगा कि रोग भी न जाए, रोगी भी न जाए, धंधा चलता रहे। निवृत्त तरशैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। इसको सुन करके कौन तृप्त होगा? पशु ही तृप्त हो सकते। એટલા માટે નૈમિષારણ્યમાં શૌનકાદિ ઋષિઓ કહે છે, વયંતુ ન વિતૃપ્યામ ઉત્તમ શ્લોક વિક્રમે યચ્છૃણવતામ રસજ્ઞાનામ સ્વાદુ સ્વાદુ पदे पदे वयंतु न वितृप्याम। उत्तम श्लोक चरितम है ही ऐसा, सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती, प्यास और बढ़ती। वास्तव में रति उसी को कहते हैं जब प्यास और तृप्ति दोनों बढ़े। तृप्ति का भी अनुभव करें हम, लेकिन प्यास भी बढ़ती रहे। एक बार पिया और तुम तृप्त हो लिए तो तुमने क्या पिया? नहीं, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। वो रति दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली प्रीति का नाम है। राजा की ये कथा में रति देखकर शुकदेव प्रसन्न हुए, बोले सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायांते यज्जाता नैष्ठिकी रति ही। तुझे भगवान की कथा में रति हुई, तुम बार बार भगवान की कथा के विषय में प्रश्न पूछ रहे हो। न क्षुधा का भान है न तृषा का। राजन, भगवत कथा के विषय में पूछा गया प्रश्न, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् स्त्रीन् पुनाति ही वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रंस्तत्पाद सलिलम यथा, सबको पुनीत कर देता है। प्रश्नकर्ता को, जवाब में कथा सुनाने वाले वक्ता को, और उन दोनों के संवाद को सुन रहे सभी श्रोताओं को उसी भांति पवित्र कर देता है। तत्पाद सलिलम यथा, जैसे भगवान के चरण की धोवन गंगा स्नान करने वालों को, पान करने वालों को, दर्शन करके प्रणाम करने वालों को, सबको पुनीत कर देता है। गंगे तब दर्शनान मुक्ति ही, गंगा की यह महिमा है। तो उसी तरह भगवान की कथा के विषय में पूछे गए प्रश्न की ये बात है, कथा की नहीं। कथा के विषय में पूछे गए प्रश्न की ये महत्ता है, ये महिमा है। तो उस प्रश्न के उत्तर में जो कथा सुनाई देगी वो क्या करेगी फिर? बोले प्रश्न, कथा विषयक प्रश्न पवित्र कर देता है, पुनाति। तो उन पवित्र हृदयों को ये कथा प्रेम से भर देती है, भक्ति से भर देती है। जिसके श्रवण मात्र से यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा, ये प्रथम स्कंद में कह चुके हैं। तो पवित्र हृदय में ही भक्ति प्रकट हो सकती, टिक सकती। आगे चल करके भी राजा परीक्षित इस प्रकार का निवेदन करेंगे 10वें स्कंद में ही। यच्छृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वंच शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारं वद मन्यसे चेत्।
तब वो वहां चर्चा करेंगे। सुनो राजा, भगवान के प्रागट्य की कथा सुनाता। इस धराधाम पर जब बहुत पाप बढ़ गए, अनाचार, अत्याचार, दुराचार, पापाचार हद से बाहर होने लगे, कंस, जरासंध, शिशुपाल इत्यादि दुष्ट राजा हुए, अघासुर, बकासुर, वृषभासुर सब दैत्य हुए। आ बधाना पाप थी पीड़ाયેલી पृथ्वी, જ્યારે પાપનો ભાર સહી ન શકી। गौर भूत्वा अश्रुमुखी, गाय का रूप बनाया, आंख में आंसू, रोती हुई। गाय रोवे दुखी होकर, पृथ्वी रोवे। ए पृथ्वी वासियों, फिर क्या करोगे? कहां रहोगे? कहां जाओगे? गाय दुखी होगी, ये धरित्री दुखी होगी पाप कर्मों से। और ये वाला पाप कि गाय का दूध पीना है और गाय की सेवा नहीं करनी है, गाय बीमार हो जाए भटकते छोड़ देना। एक जमाना था कि गाय दूध देते देते અને પછી વસુકી જાય તો એ માણસ એની સેવા કરતા, ને મરી જાય ત્યારે પછી એને આંખમાં આંસુ સાથે વિદાય આપતા કે માવડી તે બહુ દૂધ પાયા, અમને બહુ અમૃત પાયા। હવે અને એ દૂધણી ગાય જેને ત્યાં મરી જાય ને તો ગામના બીજા લોકો ખરખરો કરવા જાતા ત્યાં એના ઘરે। वो स्थिति थी। और आज हम कहां पहुंच गए? भटकता छोड़ते हैं गाय को, प्लास्टिक खाना पड़ता है उसे, भूखी घूम रही है। और थोड़ा बहुत दूध बनता भी है तो इतना सा खिलाते हैं, शाम को तो लौट आती है बेचारी घर पे। दोहन किया, दूध ले लिया। ये शोषण, दोहन क्या, ये शोषण। अब जब गाय दुखी रहेगी, गाय आंसू बहाएगी, धरणी दुखी होगी, पृथ्वी आंसू बहाएगी, धारण करेगा कौन? वही गाय वृषभ को जन्म देती है, बछड़े को जन्म देती है, वही वृषभ धर्म। धर्म गाय से ही है, गाय से ही टिकता है। उस धर्म का पोषण करने वाली, उसको दूध पिलाने वाली गाय है, गौ माता। गाय नहीं रहेगी तो धर्म कैसे टिकेगा? धरणी का क्या होगा? तो धरती पुत्रों, पृथ्वी की संतानों, इसलिए सतत सोचो, विचार करो, गो हत्या के पाप से बचो और गाय भूखी न मरे, गाय भटके नहीं, ये सुनिश्चित करो। और कुछ करो न करो, बड़े बड़े मंदिर बनवा सको अच्छी बात है, बनाओ, लेकिन नहीं तो ये काम तो जरूर करो, जरूर करो। इसलिए यहाँ वाला जो गो भक्ति महोत्सव है, ये वाला संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता। गाय के बचने से धर्म बचेगा, गाय के बचने से धरती बचेगी, गाय के बचने से ही धरती की संतान बचेगी। गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती। क्या दशा है गाय की, क्या दशा है धरित्री की। गाय माता छे, धरती माता छे। ये दुखी था, ये रड़ती हो, कोने के क्या जाए? पेला ऋषि मुनियों ની પાસે જાય। ऋषि मुनियों के लगातार અમે गला फाड़ी फाड़ी कथाओं करीए छीए, वाँचीए छीए, लोकोने समजावीए छीए, यज्ञ याद आदि करावीए छीए। आ बधा साधु संतो लगातार विचरण करे छे। आ ठाकुरजीनी सेना छे। एक सफेद कपड़ा वाली बटालियन, एक भगवा कपड़ा वाली बटालियन, एक पीला कपड़ा वाली बटालियन, ये सब बटालियन है अलग अलग। भगवान विश्वक्सेन है। मोते संत अधिक करी लेखा, शबरी को उपदेश करते समय भगवान राम कहते,
સર્વતંત્ર મારો ભગવાન સ્વતંત્ર, પણ અહમ ભક્ત પરાધીન યસ સ્વતંત્ર ઇવ દ્વિજ. ભાગવતમાં કહે છે સ્વયં ભગવાન પોતાના મુખે અહમ ભક્ત પરાધીન. અંબરીશનું ચરિત્ર આપણે સાંભળીએ છીએ ભાગવતમાં. અહમ ભક્ત પરાધીન યસ સ્વતંત્ર ઇવ દ્વિજ. સાધુવીર ગ્રસ્ત હૃદયો ભક્તૈર ભક્ત જનપ્રિયા. પણ સાંભળી લે, અહીંયાથી સાંભળે ને અહીંથી કાઢી નાખે. શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસન ન કરે. કારણ કે ભોગવાદ એટલો વધ્યો છે, પૈસા ધનનો લોભ અને આ બધા મીડિયાની ગંદકી. તો શું કરીએ? દેવતાઓને પ્રાર્થના કરીએ, દેવોની પાસે જઈને પ્રાર્થના કરી. તો દેવો કહો તમે અમારી સામે જોયું, અમારી સામે જોયું. મારું 82 કિલો વજન હતું, વરુણ કહે છે 52 થઈ ગયો છું. दुबला पतला हो रहा हूं. क्यों? वो खाने को नहीं मिल रहा. खाने को नहीं मिल रहा है क्यों? बोले यज्ञ कहां हो रहा है? यज्ञ के द्वारा ही तो देवताओं को आहुतियां दिया जाता है. अब यज्ञ आगादी बंद, इतना भोगवाद, यज्ञ आगादी बंद. देवता बोले हम भी दुबले पतले हो रहे हैं, मरवाने वाके जीवीए छी भाई. आ तो अमृत चाख्यू ने એટલે ટકી રહ્યા છીએ, बाकी तो केदीना राम शरण थी गया हो. लेकिन हमारे शरीर में जोर ही नहीं है, बल ही नहीं है. हो तो बदा समदुखिया भेगा थे. बोले हाँ क्या किया जाए? बोले आपड़ा वडील, हमारे बुजुर्ग जिन्होंने ये सब बनाया, जो सबके बुजुर्ग हैं, उन्होंने सृष्टि बनाया, उन्होंने एक विधान बनाया, उनके पास जाते. तो बदा ब्रह्मानी पासे गया. हे प्रजापिता, आपने सृष्टि बनाया, आपने वेद के द्वारा एक विधान तैयार किया. અને જુઓ તો ખરા તમારી બનાવેલી સૃષ્ટિમાં કેવું થઈ રહ્યું છે. આ પૃથ્વી દુઃખી છે, ઋષિમુનિઓ દુઃખી છે, આ દેવતાઓ મરવાને વાંકે જીવે છે. તમે કંઈક કરો. એટલે બ્રહ્માજીએ કહ્યું ભાઈ संविधान बनाना, विधान तैयार करना और लोगों को देना उनके कल्याण के लिए, ये हमारा काम है. अब आप सांसदों को कहोगे तो सांसद लोग तो यही कहेंगे कि भाई कानून बनाना ये संसद में बैठकर हमारा काम है, लेकिन कानून का क्रियान्वयन हो ये देखना तो कार्यपालिका की जिम्मेदारी है ना. और यदि तदनुसार कोई न व्यवहार करे तो फिर न्यायपालिका की भूमिका आती है. तो ब्रह्माजीए કહ્યું બીજું તો શું થાય? આપણે સમજાવીએ, છોકરાઓ માને નહીં તો પછી શું થાય? હવે બ્રહ્માજીએ જ્યારે આવું કહી દીધું ત્યારે બધા નિરાશ થઈ ગયા. તો પછી એક કામ કરો, હવે તો ભોળોનાથ બાકી રહ્યા. ભોળાનાથને કહો કે હે મહાદેવ, હવે આમાં કંઈ સુધારો બુધારો થાય એવું લાગતું નથી. ત્રીજું લોચન ખોલો અને બધું બાળીને ભસ્મ કરો. વાત પૂરી. આમાં કોઈ સુધરે એવું લાગતું નથી. એટલે જ્યાં મહાદેવની સામે જોયું ત્યાં તો મહાદેવ ત્રિશુલ લઈને ઊભા થયા. खोलो खोलो. फिर मत कहना कि बाबा जी ने खोल दिया तीसरा लोचन, पहले बता दो खोलो. ત્યાં પાછા डाया माणसों બધા આવી જાય ને વચ્ચे. ब्रह्मा जी ने नहीं 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 महादेव आप बैठो, आप बैठो, आप शांति से बैठो, अभी वो समय नहीं आया है प्रलय का भगवान, आप शांत हो जाओ, आप बैठो. कि तो પછી કરવું શું? ब्रह्मा जी ने कहा एक अभी उपाय बच रहा है. क्या? भगवान नारायण की शरण में जाए. चलो सब मेरे साथ. ब्रह्मादि सब देवता, स त्रिनयनः शिवः, शिव जी साथ में, गौरूप धारिणी पृथ्वी, सब मिलकर के गए
क्षीरपयोनिधे तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवम वृषाकपिम पुरुषम पुरुष सूक्तेन, वहां जाकर पुरुष सूक्त से भगवान जगन्नाथ की स्तुति करी। आकाश में आकाशवाणी थई, धैर्य रखो, भरोसा तुम्हारा न टूटे, मैं अपने अंश समेत यदुवंश में प्रकट होऊंगा, भूभार हरण करूंगा, भू पराग हरण करूंगा, भूप राग हरण करूंगा। अब બધા શબ્દોના ખેલ આચાર્યો કરતા હોય कि भूप राग, राजाओं के राग को, अभिमान को मिटाऊंगा, भूप राग, और भू पराग इसलिए मिट्टी खाएंगे। कृष्णो मृदम भक्षतवान इति मात्रेन्यवेदयन्, धर्म का संस्थापन, साधुओं का परित्राण, दुष्टों का दमन करूंगा। ब्रह्मा जी आकाशवाणी सांभळीने सौने संभळावीने सौने आश्वासन आप्યું। पृथ्वी को ढाढ़स बंधाया, सब अपने अपने धाम में गए। यहां धराधाम में देवक की पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। विधिपूर्वक कन्यादान थयु, दायज आप्यो, दीकरी बाने विदाई कर्या, रथ तैयार थयो, एमां वर वधु आरूढ़ थया, विराजा। सारथी ने हटावीने कंस पोते लगाम हाथ में लई अने रथ चलाववा बैठो। हमारी बहन को ससुराल तक पहुंचाने हम जाएंगे। ये सगे भाई बहन नहीं है, चचेरे हैं, परंतु बहन देवकी के प्रति बहुत प्यार है। भगवान ने आ गम्यू नहीं कि हूँ जेना द्वारा प्रकट थवानो एना जीवन रथनो सारथी कंस होय, ये बराबर नहीं। कंसे देहाभिमान छे, कम सुखम स्यतीति कंसा। आकाश में आकाशवाणी थई, हे अबुद्ध, जे तारी बहन देवकी माटे तने आटलो प्यार छे, प्रेम छे, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध, एना 8मा गर्भथी तारो नाश थशे। श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार अपने मृत्यु की पूर्व सूचना इन दोनों को मिल जाती है, राजा परीक्षित को भी और राजा कंस को भी। लेकिन मृत्यु की पूर्व सूचना मिलने के बाद दोनों ने क्या किया, बस वही संदेश लेना। राजा परीक्षित ने अपनी मृत्यु को धन्य करने, मरण ने सुधारवा माटे प्रयास कर्यो, अने कंसे मृत्यु थी बचवा माटे कि देवकी बचेगी तो देवकी के 8वें गर्भ से मेरा नाश होगा ना, मैं देवकी को ही खत्म कर देता हूं। देवकी ने मारवा तैयार थयो। जे बेन प्रत्ये आटलो भाव हमणा हमणा हजी बतावतो तो ओळ घोळ थई जतो तो बेन उपर, ईज पाछो बेन ने मारवा तैयार थयो तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। तुलसीदास जी जब रामायण में लखे ने, दामिनी दमक रहन घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही। तुलसीदास जी कहते हैं जिस तरह से दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती, बोले बादलों में बिजली स्थिर नहीं रह रही थी, कौंधियाती चली जाती। वसुदेव जी समझायो। वसुदेव जी एवा पुरुष छे, शूरवीर छे। वसुदेव जी सुंदर, आ कृष्ण में सुंदरता आवी छे ने एना बापाथी आवी। हाँ, कृष्ण ने भगवान वगैरह आपने कहिए ना, भगवान त्रिभुवन सुंदर छे, वो बात तो है ही है, लेकिन वैसे भी देखा जाए तो श्री कृष्ण के पिता वसुदेव भी कम सुंदर नहीं थे। द मोस्ट हैंडसम पर्सन एट दैट टाइम। वसुदेव जी जेटला सुंदर छे, वसुदेव जी एटला ज शूरवीर छे, अने वसुदेव जी एटला ज धीर छे। એટલે આવી
અચાનક પરિસ્થિતિ આવી પડે ને તો પેનિક ના થાય, ડરી જાય, બાપા હવે હું કરશું, હવે હું કરશું. ઘણા લોકો તો થોડીક તકલીફ આવે ને એકદમ પેનિક થઈ જાય, બીજાને બીવડાવે, પત્યું હવે હવે કાંઈ ન થાય આમાં, એ બધું હવે ગયું, રામ ભજો મારા વાલા, હવે આમાં કાંઈ થાય એમ નથી. એવી નિરાશા બધી જગ્યાએ ફેલાવી દે. વસુદેવજી પેનિક નહીં હોતે, એકદમ શાંતિથી કંસને સમજાવે છે, એનો ધર્મ સમજાવે છે, તારી સામાજિક ફરજો શું એ સમજાવે, અને એને એમ કહે છે કે દેવકીથી ક્યાં તારું મૃત્યુ છે, દેવકીના 8મા ગર્ભથી મૃત્યુ છે, દેવકીના સંતાનથી. मैं तुम्हें वचन देता हूँ, देवकी से होने वाली संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगा. આ વાત કંસને આમ થોડી બુદ્ધિમાં બેઠી, અને વસુદેવજી જેવા સમજાવવાવાળાને, વસુદેવજીનું ચરિત્ર પાછું એવું કે કંસને પણ વસુદેવના વચનમાં ભરોસો વિશ્વાસ કરવો જ પડે. ઘણા લોકો ગમે એટલું બોલે ને આપણને ભરોસો થાય જ નહીં, કે કોણે કીધું તો કોઈલાય પત્યું, એ કોઈ દી સાચું બોલ્યો માણસ, એની વાત કોઈ દી સાચી મનાય જ નહીં. અને કોણે કીધું તો કે ફલાણા ભાઈ, તો સાચું હોય હો, કારણ કે એ માણસ હંમેશા સાચું બોલે, એનું ચરિત્ર એવું છે. તો વસુદેવજીનું ચરિત્ર એવું છે કે કંસને પણ વસુદેવમાં વિશ્વાસ કરવો પડે. દેવકીને મારવાનું છોડ્યું, એના સંતાનને મારતો રહ્યો. 6 પુત્ર થયા, 6 ને કંસે માર્યા. 7મા રૂપે સાક્ષાત શેષ પધાર્યા. દેવકી માના ઉદરમાં ભગવાનની આજ્ઞાથી, ભગવાનની માયાએ ત્યાંથી શેષનું સંકર્ષણ કરી અને વસુદેવજીના બીજા પત્ની રોહિણી નંદબાવાના ગોકુળમાં બિરાજતા હતા એના ગર્ભમાં પ્રસ્થાપિત કર્યા. આવું થાય કેમ ન થાય? અત્યારે તો થઈ રહ્યું છે. વિજ્ઞાનના આ મેડિકલ સાયન્સના ક્ષેત્રમાં સરોગસી મધરનો જમાનો આવ્યો છે અત્યારે. ये सरोगेट मदर शू है? गर्भ कहीं अन्यत्र तैयार होता है, आरोपित किसी अन्य माँ के गर्भ में किया जाता है, वहाँ उस गर्भ का विकास होता है, उस माँ से फिर उसका जन्म होता है, वो प्रसूता वो कहलाती है. तो ये तो मेडिकल साइंस में भी आजकल हो रहा है. પણ અહીંયા કથા છે, સંકર્ષણ કરી ત્યાંથી શેષનું રોહિણીજીના ઉદરમાં પધરાવ્યા. દેવકીને 7મા ગર્ભનો પ્રસવ ન થયો, અને અહીંયા નંદબાવાના ગોકુળમાં રોહિણીજીના ઉદરથી બોલીએ દાવજી મહારાજ કી જય. दाऊजी को भी अवतार ही माना गया है. हाँ, केशव धृत हलधर रूप जय जगदीश हरे. हलधर बलराम ठाकुर जी का अवतार. કંસને ખબર પડી દેવકીને 7મો ગર્ભ હતો પણ હવે નથી. કોઈએ કહ્યું કદાચ આપના ભયને કારણે ગર્ભ પડી ગયો હશે, તો કોઈએ કહ્યું એવું હોય તો હવે આવે તે 8મો. કંસ સાવધાન કારાગારમાં કેદ કર્યા વસુદેવ અને દેવકીજીને. અને પછી વસુદેવ દેવકીજી તો ભગવાનના ભક્ત છે ને, હંમેશા એનું પોઝિટિવ થિંકિંગ હોય, દરેક વિધાનને મંગલમય માને. ठाकुर जी का हर विधान मंगलमय है, हमारा कल्याण करने वाला है. कारागार में बंद कर दिया, બહુ સારું થયું. અહીંયા હવે નિરાતે ભજન થશે, ક્યાંય જવું નહીં, કોઈ આપણને મળવા આવે નહીં, ફોન તો એલાઉડ જ નહીં. બહુ સારું થયું. લ્યો, અહીંયા નિરાતે ભજન થશે. वसुदेव जी और देवकी जी कारागार में भजन कर रहे हैं. तम उद्भूते जायमाने जनार्दने भगवान ने विचार किया कि मैं चंद्रवंश में प्रकट होने जा रहा हूं, तो मुझे चंद्रमा की पत्नी में प्रकट होना चाहिए. चंद्रमा निशानाथ है, अतः मैं निशा में रात्रि में प्रकट होऊंगा. और फिर मैं देव की मां के द्वारा प्रकट होने जा रहा हूं. कहीं रोहिणी मां बुरा मान ले कि मैं भी तो वसुदेव पत्नी थी, मुझ में भी तो आप प्रकट हो सकते थे. इसलिए भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में प्रकट होना स्वीकार किया, ताकि मां रोहिणी से भी कह सके कि मां हम तुम में भी प्रकट हुए हैं.
फिर सभी पत्नियों में रोहिणी अत्यंत प्रिय पत्नी है चंद्रमा की। जहां परस्पर ये वाला प्रेम हो वहां प्रभु का प्रागट्य होता, जिसके चलते तो ब्रह्मा जी ने ससुर जी का शाप सहना पड़ा चंद्रमा को, लेकिन प्रेम प्रेम होता। मध्यरात्रि निशीथ बेला અને ત્યારે મથુરાના કારાગારમાં એક દિવ્ય પ્રકાશ પ્રગટ થયો। બોલીએ પુરાણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કી। અને પછી એમાં ચતુર્ભુજ મૂર્તિના દર્શન થયા। તમ અદ્ભુતમ બાલકમ અંબુજેક્ષણ तम अद्भुतम बालकम अंबुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदार युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगं पीतांबरं वसुदेव जी ने और देवकी जी ने भगवान की स्तुति करी। विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनुत्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे। वसुदेव जी ने स्तुति कर ली और देवकी जी की ओर देखा तो माँ देवकी ने भगवान की स्तुति करी। की मां भी स्तुति करके चुप हुई। स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मतलब हम बोलते हैं, भगवान सुनते हैं। फिर जब मौन हो जाते हैं तो मतलब भगवान बोलते हैं, हमें सुनना। तो उस मौन से एक वाणी उठी, वो भगवान की थी, विभुवाणी। तुम ही पूर्व सर्ग में प्रश्नी और सुतपा थे। तुम लोगों ने बहुत तप किया। मैंने वर मांगने के लिए कहा, जो मांगोगे दूंगा। तुम लोगों ने मांगा, प्रभु आपके समान पुत्र चाहिए। मैं तो फंस गया, क्योंकि मेरे जैसा तो संभव ही नहीं है, कोई और है ही नहीं। न तस्य प्रतिमा अस्ति, मेरे समान तो संभव ही नहीं। तो तुमने जो मांगा वो देना। देखो भगवान कहते मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मेरे समान कोई है ही नहीं। लेकिन यदि तुम चाहो तो मैं ही पुत्र बनकर आ सकता, यह संभव है। सामे वाळो मागे અને આપણે ના આપી શકીએ તો આપણે આપણી ઈચ્છાથી જે આપીએ એ 3 ગણું કરીને આપવું જોઈએ, આવી નીતિ છે। તો હું પોતે તમારો પુત્ર બનીને આવીશ, અને એક વાર નહીં 3 વાર। तो मैं पहली बार आपका पुत्र बनकर आया, प्रश्निगर्भ कहलाया। उसके बाद तुम कश्यप और अदिति बने। मैं दूसरी बार आपका पुत्र बनकर आया, वामन उपेंद्र कहलाया। ये तीसरी बार में आप वसुदेव देवकी के रूप में आए हो। मैं तीसरी बार तुम लोगों का पुत्र बनकर के प्रकट हो रहा हूं। चिंता न करो, कारागारना द्वार खुली जशे। यमुनाમાં ભલે પૂર આવ્યું હોય પણ તમને માર્ગ આપશે। મન નંદના ગોકુળમાં પધરાવી લો। મારી માયા પુત્રી બનીને ત્યાં પ્રગટ થઈ છે ને લઈ આવો।
ભગવાન આટલી સૂચના આપી અંતર ધ્યાન થયા અને બાળકના રૂપમાં માં દેવકીની ગોદમાં બોલીએ બાલકૃષ્ણ ભગવાન કી. વસુદેવજીએ ટોપલો તૈયાર કર્યો, એમાં વસ્ત્ર બિછાયું, બાલકૃષ્ણ પ્રભુને એમાં પધરાવીને ટોપલો માથે ધારણ કર્યો અને તરત હાથ પગની બેડીના બંધન ખુલ્યા. ભગવાનને જે મસ્તક ઉપર ધારણ કરે પછી એને બંધન ક્યાંથી રહે? એ મુક્ત જ હોય. ભગવાનની માયાને કારણે બધા દ્વારપાળો નિદ્રાધીન થયા હતા. કારાગારના દરવાજા ખુલી ગયા. વસુદેવજી ટોપલામાં ઠાકોરજીને પધરાવી બહાર પધાર્યા. મથુરાની બહાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, વીજળી ચમકી રહી છે, શેષે આવી છત્ર કર્યું છે. શ્રી યમુનાજીએ બાલકૃષ્ણ પ્રભુના ચરણારવિંદનો સ્પર્શ કરીને માર્ગ આપ્યો છે. ગોકુળમાં પધાર્યા વસુદેવજી, નંદાલયમાં પધાર્યા, બધા જ સૂતા છે. યશોદાએ એક પુત્રીને જન્મ આપ્યો. બાલકૃષ્ણ પ્રભુને ત્યાં પધરાવી એ પુત્રીને લઈ અને પછી પાછા જેમ ગયા હતા એમ વસુદેવ મથુરા પધાર્યા. કારાગારમાં પધારતાની સાથે કારાગારના દ્વાર બંધ થયા. વસુદેવજીના હાથ પગમાં બેડીના બંધન ફરીથી આવ્યા. હરિવંશ તમે સાંભળો, એની કથા વાંચો અને શ્રીમદ ભાગવત થોડા સા અંતર મિલેગા. हरिवंश थोड़ा इतिहास के ज्यादा करीब है. भागवत महापुराण. फिर से हाथ पांव में बेड़ी के बंधन. मायापुत्री जैसे ही देवकी की गोद में गई रोने लगी. द्वारपाल जाग्या. कंस ने समाचार आप्या. कंस दौड़तो आव्यो. वसुदेव देवकी क्या छे मारो काळ. देवकीए कह્યું ભાઈ આ તો પુત્રી છે, અબળા છે, તે મારા બધાય પુત્રોને મારી નાખ્યા, એકને તો જીવતી રહેવા દે. કંસને સાંભળીને નવાઈ તો લાગી કે જેનાથી મારું મૃત્યુ, દેવકીનું એ 8મું સંતાન પુત્રી. પણ વિચાર કર્યો મારે તો 8મા ગર્ભથી કામ છે. બાળકીને પગથી પકડીને ખેંચી લીધી, ગોળ ગોળ ઘુમાવી, કારાગારની પથ્થરની દિવાલમાં પછાડી, પણ હાથમાંથી છટકી ગઈ, અંતર્ધ્યાન થઈ. કંસ હજી કંઈ સમજે કે શું થયું એ પહેલા અષ્ટભુજાના રૂપમાં પ્રગટી અટ્ટહાસ કરતી હુઈ બોલી, તું મુझे क्या मारेगा दुष्ट. તારો કાળ સુરક્ષિત જગ્યાએ પહોંચી ગયો છે. એ અંતર્ધ્યાન થઈ. પછી કંસ એકદમ પરેશાન. પછી તો કંસના નાટક તમારે જોવા હોય ને તો ભાગવતમાં વાંચજો. વસુદેવજીને દેવકીજીને પગ પકડે ને પછી મનાવે છે કે આ મોટી મોટી જ્ઞાનની વાતો કરવા માંડ્યો. બોલો કંસ અહીંયા. આપણને એમ થાય કે ઓહો આટલો ડાયો, આટલો પંડિત. પણ જેવો પાછો ગયો અને પેલા આજુબાજુ વાળી ચંડાળ ચોકડી બધી ભેગી થઈને એને ચડાવ્યો, પાછો હતો ત્યાં ને ત્યાં. મારી નાખો, મારી નાખો, જેટલા જન્મેલા બાળકો હોય વ્રજમાં બધાને મારી નાખો. જ્યાં પણ દેવકીનો 8મો ગયો હોય એ ઝપટે ચડી જશે. મારો, બધા બાળકોને મારો, મારો, બાળ હત્યાઓ કરો. અને આ કામ કરવાનું બીડું પૂતનાએ ઉપાડ્યું. એટલે આમ આપાધાપી મચી ગઈ. કંસ અશાંત, ભયભીત. પણ આપણે તો ચાલો ભાવથી ભરાયેલા ગોકુળમાં જઈએ. ગોકુલ મેં ભોર ભાઈ વાંસળી વાગી રહી છે, વાલાના વધામણા થઈ રહ્યા છે. माँ यशोदा जागी, बाल कृष्ण का दर्शन किया, अपनी गोद में भर लिया, माँ आनंद से भर गई, कुछ बोल न पाई. नंद बाबा की बहन, नाम था सुनंदा. भाभी को बच्चा होने वाला है, कामकाज में हाथ बटाने भैया के घर आई है. उसने सुन लिया शिशुरुदन को, कान चमकिया, लगता है वो शुभ घड़ी आ चुकी. दौड़ कर आई यशोदा जी के कमरे में, देखा सुंदर शिशु को माँ यशोदा की गोद में. भाभी ये क्या, देख सुनंदा लालो भयो है. सुनंदा वहां से उछली, भागी, दौड़ कर गई गौशाला में जहां नंद बाबा गायों की सेवा में पधारे थे. भैया भैया बधाई हो, आपके लालो भयो है. और जैसे ही सुना नंद बाबा ने, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के. यशोदा को लाल भयो,
जय कन्हैया लाल के, यशोदा को लाल भयो, जय कन्हैया लाल के, हे गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल के, हे नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल के, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल के, हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल के, हे यशोदा को लाल भयो, जय कन्हैया लाल के, यशोदा को लाल भयो, जय कन्हैया लाल के, हे नंद घेरा नंद भयो, आज गोकुल में आनंद भयो, हे हाथी बिना घोड़ा बिना, हे जवान को हाथी घोड़ा, हे नंद घेरा नंद भयो, हे हाथी घोड़ा पालकी,